Once again, hello all of you. How are you? कैसे हो सभी लोग? Yes. So, welcome to the class again of the states of matter. हम लोगों ने states of matter previous class में भी पढ़ा था. We have done two states of matter. कौन से किए थे? We have discussed about the solid state of matter. That what are the properties of solid? And also we have discussed the liquid state of matter. है ना? हमने दोनों की properties पढ़ी थी. हम इसको solid को हम solid state क्यों बोलते हैं? Why we call the liquid as a liquid state? That all properties we have discussed in very much detail. Yes. So in today's class we will discuss the third state of matter. कौन सा है third state of matter? That is the gaseous. Yes. So gases is the state of matter again. For this also, for the gases also, I will say that हम लोग इसको भी जो तीन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे द मेन थ्री प्रॉपर्टीज जिसके बेसिस पे हमने सॉलिड और लिक्विड को डिफाइन किया था द सेम थिंग वी विल सी फॉर द गैसेस आल्सो एंड विच वाज द फर्स्ट उसमें से पहले है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. यदि आप गैसेस इमेजिन करो, आप जैसे इंसेंस स्टिक को जब बर्न कर रहे हैं तो जो गैस निकल रही है, या or we burn something and we can see some gases released. We cannot see the air. Yes, we cannot see the other gases as it is. ऐसे ही नहीं देख सकते हम. लैब में वगैरह हम देख सकते हैं by some experiments or like that. But yes, if you feel or if you think about a gas, at least we can see a burning of a incense stick, the gas which is coming out. Yes, how must be the particles in that gas? उसमें स्पेसेस कैसी होगी, पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस कैसी रहेगी? कम रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी, या थोड़ी सी कम रहेगी? व्हाट कैन यू थिंक अबाउट दैट? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इट इज हाउ यू कैन सी नाउ. क्या दिख रहा है? ये है आपके गैसेस के पार्टिकल्स. यस, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस. द स्पेस इज टू मच, है ना? बहुत दूर दूर है ये पार्टिकल्स एक दूसरे से. Isn't it? So the space between particles is what? Is it a maximum or it is minimum? The particles are much farther apart from one another. एक दूसरे से बहुत बहुत दूर है. The space between particle it is maximum, है ना? As compared to solid and liquid, the gases के जो particles हैं उनके बीच की spaces कैसी रहेगी? बहुत ही ज्यादा रहेगी. This maximum there. Okay. अब स्पेस बिटवीन द पार्टिकल है, एक पार्टिकल इधर है एक पार्टिकल इधर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? डेफिनेटली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द इंटर पार्टिकल स्पेस इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी वेरी लेस. यस, वेरी लेस, और आई कैन से नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर रहेगा, है ना? वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल और इट इज वेरी लेस ऑल्सो. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी एक कहीं जा रहा है एक कहीं जा रहा है, देयर इज नो अट्रैक्शन, सो द पार्टिकल्स आर आल्सो moving very fast and the space between the particle will also be more there. Okay, so you can see here one particle is moving here, the another ऊपर जा रहा है, one is going in the side. So I can say the third point, that is the movement or kinetic energy of particle. What is it? It will be maximum. Yes, it will be maximum. वो सबसे ज्यादा रहेगी as compared to solid, liquid and gaseous. Yes, if we compare these three, the gaseous will have a maximum movement of particles or the kinetic energy between the particles. It will be very much. So the particles बहुत ज्यादा move कर रहे हैं. क्यों move कर रहे हैं? क्योंकि force of attraction कम है, और force of attraction कम है, इसीलिए उनके बीच की spaces भी बहुत ज्यादा है. Yes. So these are the 3 points on which we can say that what? The gases. I can say here that gases do not have a fixed shape. Can I say that? The gases or the gas, just a minute. Okay. Yes. So I'll just erase this thing.
Yes, we can say that the gas, it is what? It does not have fixed shape. Fixed shape नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? Because the position of the particle is not fixed. They are continuously moving. वो move कर रहे हैं. Kinetic energy between the particle is very much, isn't it? It is maximum there, highest. So it is the particles are moving. यदि particle move हो रहे हैं तो उसका shape तो fix नहीं रहेगा. ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? देखो, फॉर दैट आई हैव टेकन दिस सो मेनी डिफरेंट बलून्स आते हैं ना, कलरफुल बलून और अलग अलग शेप के बलून है. ये एक अलग शेप का बलून है, स्टार शेप का है, दूसरा सर्कल है, तीसरा ओवल है. यस, सो डिफरेंट शेप्स ऑफ बलून्स आर देयर. इन दिस बलून स्टूडेंट्स, the amount of gas it will be equal, suppose. Yes, but what you can see here, the shape of the balloons. बलून के शेप कैसे है? बलून के शेप तो डिफरेंट है. तो बलून के शेप क्यों डिफरेंट हो रहे हैं? Because the air which we have feeling or the gas which is there, it is taking the shape of the balloon. ये स्टार शेप का बलून था, तो जब हमने उसमें गैस भरी तो वो स्टार शेप बन गया. ये ओवल शेप का बलून था, जब छोटा था तो ओवल शेप था, जब हमने गैस भरी तो ओवल शेप आ गया. This has taken a circle shape, so it is taking the shape of the balloon. That means the gas do not have a fixed shape. Yes, it can take the shape of a container, I can say. Yes, it can take shape of container, or in whatever the gas is there, it will take the shape of that. Yeah. Second point, I can say that the gas does not have fixed volume also. Volume भी fix नहीं है. चलो, liquid में हमने देखा था कि liquid was having at least fixed volume. Its shape was not fixed. Liquid was also flowing, isn't it? But the gas, they don't have the fixed volume also. उसका volume भी change होगा. Yes, उसका volume भी change होगा. क्यों? क्योंकि the space between the particle is again not fixed. Yeah. Third point I can write for the gas, that gas flows easily, just like the liquid. Liquid से भी ज़्यादा easily flow करेंगे because the particles of the gases, they are moving maximally. Yes, they are apart from each other, so they are easy to move. They are free to move. Yes, if the particles are very free to move, yes, if they can flow very easily, that means what? Dense हो गए क्या? दूर दूर है. So density कैसे रहेगी? Density low रहेगी. So gas have low density. Density भी कम है. एक और पॉइंट है, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हो. कैन यू कंप्रेस द गैस? यस स्टूडेंट्स, gas can be easily compressed. गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड. आप गैस को बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हो, उसको दबा सकते हो. क्यों कंप्रेस कर सकते हो? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, है ना. तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस है, तो आप आराम से उसको दबा सकते हो ताकि वो पार्टिकल्स पास में आ जाए, क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस बहुत है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल कम टुगेदर व्हेन यू विल compress it. That's why the gas can easily be compressed. So these are some points. ये कुछ points आप लिख सकते हो which shows that this particular thing is a gas there. Got it students? Now जो मैंने आपको compression का बताया, the property of compression, that the gases, they have a very good compressibility. They are highly compressible. This property is used, student, yes, in our LPG cylinders. जो हमारे घर पे गैस के सिलेंडर्स आते हैं, वो सिलेंडर में क्या रहता है? गैस रहती है. और वो गैस कैसी रहती है? इट इज कंप्रेस्ड गैस. यस,
So it is observed generally in the cylinders there. The gas in the cylinders, they are highly compressed by applying. कैसे compress करते हैं उसको, कैसे दबाते हैं? By applying large pressure. We will discuss this. हम ये भी पढ़ेंगे in the next class. But yes, you can compress the gas by applying the large pressure. जब pressure उसमें बहुत apply करते हैं तो gases के particles पास में आ जाते हैं. Yes, और वो गैस कंप्रेस होने लगती है. तो दिस इज योर CNG सिलेंडर, यू कैन सी हियर, है ना. उसी तरह से ये आपका LPG सिलेंडर है जो आपके घर में यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इजंट इट. दिस इज योर ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कि ऑक्सीजन जिसमें रहती है और वो हॉस्पिटल्स में यूज होता है, इजंट इट. एंड देयर आर सो मेनी अदर in which the gases are there. So in all the cylinders, the gas is filled and it is in a compressed manner. Yes, it is highly compressed there. I hope this is clear. Yes, how you will compress it? By applying the pressure to the gas. Now this compression of gas, when जब हम लोग गैस सिलेंडर्स में भरते हैं इस तरह से, so what is the role, what is the use for this? हम क्यों सिलेंडर में भरते हैं? हम उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, but yes, by using nowadays in many cities actually there are the gas pipelines. Cylinders नहीं है गैस के, लेकिन in the vehicles जब हम CNG वाली vehicle यूज करते हैं, you will have to take the cylinder with you, isn't it? So why this is there? Because this helps for easy transportation. Easy transportation में help करेगा. Yes, ऑक्सीजन सिलेंडर डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं, CNG व्हीकल्स में यूज होते हैं. यू कैन सेंड द ऑक्सीजन थ्रू द पाइपलाइन और द LPG थ्रू द पाइपलाइन, बट in a vehicle you have to carry the CNG gas as a inside a cylinder only, which will be in a highly compressed manner, and this is done by using or applying a pressure there. Got it, students? Now another reason or another thing for a gas, I can say, जब आप घर में खाना बनता है, yes, when the food is cooked in your kitchen, without looking the food, आप वहां पर देखते भी नहीं हो कि मम्मी क्या खाना बना रही है, but you can smell and you can know, oh wow, today there is pav bhaji, yeah, or wow, today there is chole. How you can identify, आप कैसे समझते हो? You can identify it by the aroma, by the smell of that food, isn't it? And how that smell reaches to you. आपको वो smell कैसे आती है? Because yes, aroma of the cooked food reaches far away from where it is cooked because of particles of the aroma. वो जो पाव भाजी की खुशबू है, उसके जो particles है, वो जो हवा के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, और हवा के साथ साथ वो पार्टिकल्स भी मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद अ हाई स्पीड अगेन. Yes, and that's why we can say the aroma of a cooked food reaches. यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यदि गरम खाना है तो उसकी स्मेल आपको बहुत जल्दी आएगी. ठंडे खाने की स्मेल आपको दूसरे रूम तक नहीं आएगी. ठंडे खाने की स्मेल आपको लेना है, यू कैन गो नियर द फूड and you can smell like this. But for a hot food, if it is a hot food, it is just cooked there, or your mother is cooking, at that time the aroma comes in another room also. Why this is so? Because हमने पढ़ा है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है. The kinetic energy of the particles, it will become more. The particles, it will move more faster, and that's why you can smell or the aroma reaches to you. I hope this is clear. यहाँ तक समझ में आया? Yeah, so this is one example of how the gases or how the particles in the gases, they can move. They have very less force of attraction between them, and they are having a large gap or the space between them, and that's why they can mix with the particle of the air,
and they can diffuse easily, and they can reach to from one place to another place very easily with the help with the air there. Yes, so what is there? The hot food aroma reaches much faster than that of the cold. As the temperature rise, increases the speed of particle. Kinetic energy बढ़ जाएगी particles के बीच की. I hope this is clear. Yes, so this was some examples of a gases. Now, one more point I would discuss, that what is a gas pressure. गैस का प्रेशर क्या होता है? अब देखो, यदि आप किसी गैस को किसी कंटेनर में ले रखते हो, या तो जो गैस के पार्टिकल है, हमने उसको एक कंटेनर में पैक करके रख दिया, है ना? तो जो गैस के पार्टिकल्स है, जैसे कोई कुकर, yes, we have a cooker, pressure cooker in there. Yes, when something is there inside that, if you have not done anything, आपने कुछ भी नहीं रखा उसमें, हवा है सिर्फ कुकर में, you close the lid and you start the heating. आप फ्लेम देना शुरू करोगे तो क्या होगा? जो गैस रहेगी उसके अंदर, yes, it will start, उसमें प्रेशर बढ़े, क्योंकि because you are giving the heat, so the particle of that gas, they will start to move more faster. बहुत फास्ट मूवना शुरू होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो पार्टिकल्स जो कंटेनर में आपने गैस रखा है उसको हीट करना शुरू करेंगे. Yes, it will heat the containers of the part of the it will heat the containers, the particles, it will heat the containers as well as the particles, they will heat themselves. एक दूसरे को भी धक्का मारेंगे और वो कंटेनर को भी धक्का मारेंगे. ये जो प्रेशर है, इसको हम क्या बोलते हैं? We call this pressure as a gas pressure. So what is a gas pressure? It is a force of a gas particles colliding with the walls of its container. जो फोर्स से वो पार्टिकल्स अपने कंटेनर पे टकराते हैं, वो फोर्स को हम बोलेंगे गैस प्रेशर. ये जैसे ये कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है, और इसके पार्टिकल्स देखो ये कंटेनर में टकरा रहे हैं. यस, कुछ पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे से भी टकराएंगे, साथ साथ वो कंटेनर के साथ भी टकरा रहे हैं. इसके कारण जो प्रेशर डेवलप होगा, यस, इसको हम बोलेंगे, we will call it as a gas pressure. Got it? So the sum of forces exerted on the wall of a container by the gas molecules divided by the total surface area of the container wall, that is a gas pressure. यदि आपको गैस प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको पहले तो टोटल करना है किसका? The forces exerted on the wall of its container. कितना फोर्स कंटेनर की वॉल पे पार्टिकल्स ने एक्सर्ट किया है, वो फोर्स को आपको डिवाइड करना है टोटल फोर्स, टोटल सरफेस एरिया, वो कंटेनर का सरफेस एरिया कितना है. यस, यानी फोर्स को डिवाइड करना है सरफेस एरिया ऑफ अ कंटेनर से, so you will get the gas pressure. In that way you can calculate the gas pressure. Got it, students? So the random motion of particle in a gas cause the pressure it exerts. ये प्रेशर कैसे आ रहा है? जो गैस पार्टिकल रैंडमली कहीं पे भी जा रहे हैं, यस, और टकरा रहे हैं. यदि आप गैस को हीट नहीं भी करोगे तो भी गैस के पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली मूव होते हैं. Yes, they are moving continuously, and when they are moving and they are hitting the container, whatever pressure or whatever force it is there, that it is called as a gas pressure. I hope this is clear. Yeah. So this is what is a gas pressure. Now one more point I would like to tell you, that we will discuss to show the compressibility of solid, liquid and gases. हमने ये वाला पॉइंट तीनों में पढ़ा था कि the solids they will not compress, liquid it will compress little bit, but the gases can be compressed very nicely. Yes, it can compress very much. तो ये इसको हमको प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? There is an experiment for that. Yes, you can see this was an experiment which is given in your textbook also.
You have to take 3 syringes. ये syringes है इंजेक्शन वाली. Yes, हमने needles निकाल ली है उसकी. So these are the 3 syringes. 100 ml syringes लिया है. उसका जो nozzle है, we have closed the nozzle. उसका nozzle बंद कर दिया है. रबर कॉक से या किसी भी चीज से हमने उसको पैक कर दिया है. Yes. And then what we have done? We have filled there. एक में हमने गैस एज इट इज, ये पिस्टन है, पिस्टन को भी रिमूव कर दिया है. Yes, we have removed the piston from all the 3. एक में हमने चॉक पाउडर ऐड कर दिया है, दूसरी सीरिंज में हमने वाटर भरा है और तीसरे में हमने कुछ नहीं भरा है. दैट मीन्स द एयर इज देयर इनसाइड, isn't it? And then we have put the piston. Piston हमने उसको फिर से रख दिया. Got it? Now try to press through this piston. ये piston से आप प्रेस करोगे जब नीचे की तरफ में, तो आप क्या देखोगे? When we will try to press this with the piston, what you will observe? कहाँ पे प्रेस जल्दी हो जाएगा, कहाँ पर प्रेस नहीं हो पाएगा. We will definitely see that if the syringe in which the gas is present or air is present, yes, the piston containing or the syringe containing the air, it moves easily by applying a pressure. Yes, it moves easily. Am I right? The syringe in which the water is present, if you will press it with the piston, what will happen? It will move, but not very easily. Yes, will move. It will also move, but not easily. Yes, moves very easily. Got it? Whereas the chalk powder ही रखा है, so it will not move. It will not move. Yes, it will not move at all. बिल्कुल भी move नहीं होगा. Why? So इससे हमको क्या पता चल रहा है कि chalk की यानी solid की compressibility, it is not compressed. Liquid, it will be compressed little bit, and the gas, they are highly compressible. They are what? They are highly compressible. Yes. So we have seen we have to take the 3 syringes of 100 ml students that we have seen here. 3 syringes of 100 ml. Close their nozzle to remove the piston. Leaving 1 syringe untouched, fill the water in the second and piece of chalk in the third. Then insert the piston back and try to compress the content by pushing the piston in a syringe. तो हमने ऑब्जर्वेशन क्या देख लिया? हमने ऑब्जर्वेशन देखा है. Okay, sorry. Observation we have seen, it is what? The syringe with gas, what it will do? It moves down easily. Moves down easily. Yes. Second, the syringe with water. Yes, it will move or it will not move. It will move little. थोड़ा सा move होगी. Yes, it will move very little, or I can say very little. Yes. And the syringe with chalk. Do not move at all. है ना? ये थोड़ा सा मूव क्यों होगी? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स रहेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स रहेंगे, they have little bit space in between them ना. So because of that much you can compress it. जब तक वो बहुत पास में नहीं आ जाते, जो थोड़ी सी स्पेस है उतना वो compress होगा. But solid में तो space ही नहीं है, so there will be no compressibility. It will not move at all. And in the gases there is a large space, so it can compress or it can move very easily. Yes, so thus we can say that the gases are highly
compressible, है ना, as compared to solids and liquids. I hope this is clear. तो compressibility हम इस तरह से prove करते हैं. Got it? Now we have discussed all the three states of matter. We have seen what is solid, what are the properties of solid, what are the properties of liquid, and what are the properties of the gaseous. Okay. Now, if someone asks you the difference in the characteristics of थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, यदि डिफरेंसेस हमको देने हैं, यदि क्वेश्चंस में आता है, तो आप कौन से डिफरेंस देखोगे? देखो, हमने ये सभी डिफरेंस पढ़े. वी हैव जस्ट डिस्कस ऑल दिस डिफरेंसेस वेरी नाइसली. व्हिच आर दिस डिफरेंस? फर्स्ट, for solid they have fixed shape and fixed volume. Liquids they have fixed volume but no fixed shape. Gases they neither have fixed shape nor they have a fixed volume, isn't it? Then solids cannot be compressed. Just now we have seen, अभी अभी हमने देखा, liquids negligibly compressed, नहीं के बराबर होता है लेकिन थोड़ा होता है. And gases can be compressed very easily, है ना. Then we have seen the solids have high density, liquids have little less, but yes they are dense, and the gases they have very low density. Yes, and they are lighter also. इसीलिए वो light है ना, solid भारी रहते हैं. They are heavy, isn't it? Because they are dense. Then the solids do not flow. Liquids generally flow easily, and gases flow very easily again. Yes, solids are rigid. Liquids are less rigid. They are fluid, we can say. And the gases are not at all rigid. They are not rigid. Then solids do not fill their container completely. किसी कंटेनर में डालेंगे तो पूरी तरह से fill नहीं करेगा. Liquid do not fill the container completely, but yes, gases they can fill the container completely. क्यों? क्योंकि gases particles के बीच में space बहुत है और वो move होते हैं, तो वो move होते होते पूरा container को fill कर देंगे. Yes, so these are some important points for differentiation between all the three states of matter. I hope this will be useful to you. You will get the notes and the study materials once you download the app, students, the Earth Academy app, where you will get everything related to your studies there. Yes, so we will stop here only, and in the next class we will discuss the next topic. अगला topic हम next class में पढ़ेंगे. So thank you all for attending the class. Yes, till we meet for the next class. All of you keep learning. All the very best. I am sharing the link of the our app also, so you can download the Earth Academy app and you can take more and more advantage for that. Yes, till then all of you, bye bye, take care and see you all. Bye.